half of the hemoglobins will be sickle cell in the body. Those are normal human beings. They have normal hemoglobin. And those have sickle cell anemia. Both have this kind of situation. So they die because of anemia. Okay? So leave them. They are useless person having this kind of condition. They are genetically challenged. So suppose in a population there are some individuals having this kind of condition. Half of the hemoglobin is normal, half of the hemoglobin is sickle cell. And this is due to mutation. And some individuals are normal. If this population encounters malaria, have you heard of? Malaria is a disease caused by mosquito biting. Okay? And this disease is caused by a protozoa called Plasmodium. And Plasmodium feeds on hemoglobin. And they also respire with the help of oxygen carried by hemoglobin. What is the function of hemoglobin? Carrying oxygen to each and every cell in the body. So when human cells are infected with malarial parasite, these parasites feed on hemoglobin. At the same time, they are respiring with the help of oxygen carried by hemoglobin. Okay? So when populations having both kind of individuals facing malarial situation, individuals with normal hemoglobin will die because of malaria. They have no resistance against malaria. But individuals with this kind of situation, they survive malaria. So usually mutation is harmful. But in changing environmental condition, harmful mutations proven to be beneficial. So they survive. Means they are better adapted in malarial situation. Why they survive? Dekho, half of the malarial parasite, they feed on this hemoglobin and respire with the oxygen carried by this hemoglobin. And remaining half jo hoga, they will die. Because this hemoglobin cannot sustain parasite. The amount of oxygen carried by this hemoglobin or RBC not enough for the respiration of malarial parasite. उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. So most of the parasites in the body will die because of oxygen deficiency. The parasites die, you are surviving. क्या कह रहा है? उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है. They are not dying. They have some lesser strength. उसको तो कम ऑक्सीजन चाहिए ना. हमारे पास हाफ ऑफ द हेमोग्लोबिन तो ठीक है. So this, they are not dying. They have some problem, but they survive. But because of this situation, malarial parasites should die. Most of the parasites should die. So the number of parasites remain inside the body, not enough to cause death of the patient. Because there must be a threshold level. It is not that if you are attacked with certain parasites, you will be killed. Their presence will be in large amount. Yes, if this is the situation. If this is the situation, they will die. That's why I told you, leave them. So they are dying because of anemia. They are dying because of malaria. And they are surviving malaria because of this one. So देखो, it is a harmful mutation, but in changing environmental condition, it has been proven to be beneficial. That is helping in better adaptation. Yes, because of this reason. In African population in northeast in India, population in central India, they have higher frequency of sickle cell trait. This condition is called sickle cell trait. और कैरियर कोई सिंगल सर्वे नहीं है, हजारों सर्वे है. And there is no survey in Africa when there are many areas in India which are malarial endemic region. Northeast, endemic. Northeast हो गया, then central India हो गया, छोटा नागपुर areas है. These are vulnerable to malaria. So in this population there is higher frequency of this condition, around 30-40%. So second significance क्या है? Replication may cause mutation, which are usually harmful, but in changing environmental condition, they can be proven to be beneficial, helping in better adaptation.
समझी? थर्ड सिग्निफिकेंस, यही दो सिग्निफिकेंस. नाउ कम टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या होगा? लिख के दिखाओ. Yeah. Thousands of mutations are there. Glucose phosphate dehydrogenase deficiency. Glucose phosphate dehydrogenase deficiency. That also gives resistance against malaria. कुछ सोच रहे क्या सोच? अच्छा मैं सोच रहा हूँ. तो लिखो लिखो आशुतोष, पूरा लिखो. You are on the right track, but write it completely. So do not explain all these things insignificant. To make you understand, I have explained all these things. Jagjot, good at him, but not correct at him. So make a habit of writing introduction, conclusion. Otherwise, you will not write. Now, why I ask you to write introduction, conclusion in the class? Because you do not practice at home. And I know that if I little force you, you will write. And I could not understand, mugging of something, I think not a great thing. Conclusion, introductions are your innovation. उसमें क्यों ध्यान नहीं देता? इनोवेट करना अच्छा ही लगता. You innovate conclusion. It is a synthetic creation. उसमें तो ज्यादा मजा आता है. मैंने समझा दिया, तुमने समझ गया. इसमें you have not created anything. अरे टर्मिनेशन पे क्यों? रेप्लिकेशन में लिखेगा ना. कैसे वो लिखो? कैसे? ये तो बच्चे वाली कंफ्यूजन हो गया ना. 10th स्टैंडर्ड की कंफ्यूजन लिख दिया. अब बड़ा हो गया. अब इसमें कैसे ये लिखो? ये सब 10 में लिखता था, चलता था. Actually nowadays, descriptive presentation has been removed from examination system. Subject gola manna. It improves. It can check intelligence, but it cannot check managerial skill. गोला मारना क्या? अगर आप इंटेलिजेंट हो, चीजों को समझ गया, रट लिया, गोला मार देते हो. डेफिनेटली इट इवैल्यूएट्स वंस इंटेलिजेंस, लेकिन मैनेजमेंट इट नीड्स मोर देन इंटेलिजेंस. और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन से ही पॉसिबल है. गणेश चतुर्थी सही नहीं लिखा. Ashutosh, first sentence is enough. And it is a good conclusion. देखो लिख दिया ऑलरेडी एक अच्छा कंक्लूजन. देख के लिखना मत. हाँ, second part is also relevant now. The very good conclusion Ashutosh. लेकिन तो लेंदी हो गया, थोड़ा छोटा करो. अरे ये सब क्या लिखा है? ऐसे कंक्लूजन थोड़ी को लिखता. तुम तो इस पे लिख रहे हैं, सिग्निफिकेंस पे फोकस कर रहे हैं. सिग्निफिकेंस लिख दिया. सिग्निफिकेंस पे क्यों फोकस कर रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल डिवीजन.
बाकी लोग लिखो। जो इंट्रोडक्शन होती है पूरे टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, कंक्लूजन भी पूरे सब्जेक्ट पे। जगजत क्लियर नहीं है, व्हाट यूड लाइक टू से? जल्दी करना। अभी हम लोग देखो, अभी दो बिग टॉपिक्स हैं, एक सेल डिवीजन है और एक प्रोटीन सिंथेसिस। वी नीड 3 क्लास, मीन्स मंगल बृहस्पतिवार खत्म हो जाएगा। रेहान लेके आओ, जल्दी लेके आओ। आज काफी स्टूडेंट आए नहीं, शायद घर से नहीं आए होंगे। लिखा पृथ्वी? लिखो लिखो, जल्दी करो, 3 लाइन लिखने में इतना टाइम लगाएगा। कहाँ लिखा? से नहीं लिखा, आसपास में नहीं गया। Where is replication? You are writing a conclusion on replication. There is no reference to replication. देखो ये किस पे करता है? ये नोट पे करता है ना सर? अच्छा अच्छा, क्या क्या? तो खरीदा है इसीलिए, तो मैं भी खरीदूंगा तो हो जाएगा। हाँ, मेरे पास iPad 12 Pro है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लिख पाता। मुझे कोई बता देना, सारे नोट्स इसमें लिख लेता। अच्छा, क्योंकि इसको हाथ में लेके चले जाओ, कहीं भी पढ़ सकते हैं। You are on the track, but there is little diversion. तो to the point हो सकता था, लेकिन see, you are writing conclusion on replication, but you are going through mutation. देखो, फर्स्ट सेंटेंस तो जरूरत नहीं है, up to this not needed. From here you are on the track through via, do it direct. सही नहीं लिखा राज। देखो, I have referred briefly in the middle of the discussion that this process of replication is same everywhere. It is same in prokaryotes, it is same in eukaryotes, है ना? What does it suggest? So structure of DNA is one evidence in favor of organic evolution. Functioning of DNA is also giving some evidence in favor of organic evolution. DNA replication is one of the functions of DNA. DNA has 2 functions. One is producing DNA, another function is producing protein. So process of replication is more or less same in both prokaryotes and eukaryotes. That's why we can suggest all living beings have evolved from common ancestor. कहीं नहीं लिखा, तो कहीं में एक तो छोटा सा कनेक्शन भी तो बनाएगा ना। क्या लिखा बता, क्या लिखा बताओ? इम्यूनाइजेशन कहाँ लिखा है? तो क्यों लिखा इम्यूनाइजेशन? ऐसे ऐसे नहीं होता ना, जो भी लिखना है क्लियरली लिखो। इम्यूनाइजेशन अगर बीच में डाल देता तो मीनिंग ही बदल जाता, कहाँ चला जाता? एंड मोर ओवर, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट in comparison to prokaryotes. So second conclusion is, does eukaryotes evolve from prokaryotes? तो देखो, it is quite complex in eukaryotes in comparison to prokaryotes. That means prokaryotes gave rise to eukaryotes. देखो, principally both are showing same process, but prokaryotic replication is simpler than eukaryotic replication. So from the replication we can conclude that all living beings have evolved from common ancestor and eukaryotes have evolved from prokaryotes.
तो सौरभ क्या लिखता है, ये डिस्कवर क्या होना है उसमें क्यों हम लोग लिखते जाएंगे. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी फिनोमेना. दैट सेंटेंस इज रेलिवेंट, बट हाउ इट हेल्प्स दैट शुड बी रिटन. हाउ इट हेल्प्स दैट शुड बी रिटन. तो देखो कंक्लूजन होता कि नहीं. मेनी स्टूडेंट्स ऑफ साइंस दे बिलीव दैट इन साइंस देयर इज नो कंक्लूजन. ऐसे कैसे हो सकता है? क्या क्या सोच लेके बैठा हुआ है. नहीं, मैं तुमको नहीं कह रहा हूं, जूलॉजी में एक बिलीव बना के रखा है. जूलॉजी में कैसे कंक्लूजन होगा? मैंने हर टॉपिक में उनको दिखाता हूं कंक्लूजन बना के. ये गलत बिलीफ है. एक्चुअली हमारे जो कॉलेज एजुकेशन है ना, दिस टीचर्स हैव नॉट डन जस्टिस टू द स्टूडेंट्स. वो रट के बन गया टीचर, स्टूडेंट्स को कभी हेल्प ही नहीं किया. एक तो नॉलेज की कमी है, और जितना भी है उसको इस्तेमाल नहीं करते. स्टूडेंट देखो, उनका पर्पस, टीचर का पर्पस अलग है. टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए. स्टूडेंट सर कुछ भी बोलता है जो कंक्लूजन नहीं है, तो टीचर मान लेगा क्या? टीचर शुड कन्विंस स्टूडेंट दैट एवरीथिंग कैन बी कंक्लूडेड एंड यू शुड लर्न कंक्लूजन एंड दे हैव टू गिव सम कंक्लूजन. तभी तो स्टूडेंट इंस्पायर होगा. तो स्कूल में भी सिखाते नहीं है. बच्चों को देखो, तुम सिखा भी नहीं सकते. कम से कम ग्रेजुएशन में तो सिखा दे. हमें सिखाता ही नहीं है. तो नॉट ओनली यू, आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस लास्ट 20 years. No one is interested. It is not because of the problem of student, the problem of education system. वो सिखाते ही नहीं. वो लोग अगर फोकस दे, कन्विंस करे, हाउ पीपल कैन डेवलप दिस बिलीव दैट साइंस देयर इज नो कंक्लूजन, देयर इज नो इंट्रोडक्शन. मेरे पास ना बहुत टीचर भी पढ़ने के लिए आया. ड्यूक के फैकल्टी, हंसराज कॉलेज सुना होगा, हंसराज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. उसके एक ये कौन सा टीचर होता है जो टेम्पोररी काम करता है? एडहॉक टीचर्स. वन ऑफ एडहॉक टीचर फ्रॉम हंसराज came to me for test writing आज से 7-8 साल पहले. I gave him only 5 marks out of 300. तब 300 हुआ करता था. उन्हें कॉपी सभी लेके गुस्से में आया मेरे पास. आके बोलता, जानते हो आप मैं कौन हूँ? मैंने बोला मैं तो आपसे पहले मिला नहीं था और शायद टेस्ट लिख तो आप. बोलता मैं हंसराज में एडहॉक टीचर हूँ और मुझे 5 नंबर दे दिया. तो मैंने बोला दिखाओ कभी. मतलब 5 ही डिजर्व करते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं करते हो. उन्हें गुस्से में लाल हो गया. मतलब बैठो, मैं समझाता हूँ आपको 5 क्यों मिला है. पहली बात तो आप में कोई क्लैरिटी है ही नहीं. कैसे लिखना होता है आपको कुछ मालूम ही नहीं है. आप बताओ इसमें मैं क्या मार्क्स, मैं तो 1 नंबर दे भी दिया, आपको मिलना चाहिए मार्क्स. फुल ऑफ मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आर देयर. फिर क्लैरिटी है ही नहीं. ही वाज कन्विंस जो इट इज माय फॉल्ट. वो क्या किया, टेस्ट से रेगुलर स्टूडेंट बन गया. अब यहाँ पे जो मैं पढ़ाता था, कॉलेज में जाकर पढ़ाता था, फेमस बन गया. बोलता सर मेरे क्लास में तो सारे स्टूडेंट आ जाता है. फिर उसने तब तक नेट क्वालिफाई नहीं किया था. मेरे नोट से नेट दिया, पहली अटेम्प्ट में नेट हो गया उसका. बेचारा क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया. तो बाद में सुनने को आया, वो ये जो आईबी है ना, आईबी में इंस्पेक्टर बन गया. एडहॉक था वो नौकरी. तो हंसराज में एडहॉक भी तो देख के लिया जाता ना. और 5 नंबर दिया था मैंने. गुंजन रॉय था उसका नाम. तो मैं नहीं जानता था उस टीचर था. जानता भी तो क्या था, जो लिखा था वही मार्क्स मिलेगा उसको. Now next up is cell division. Mitosis and meiosis. So पहले we can start with mitosis. Tell me what is mitosis. सब लोग तो सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा 10th में. माइटोसिस क्या है? Mitosis is a kind of cell division occurring both in somatic cells and germ cells, producing 2 daughter cells with exactly same number of chromosomes of parent cell. Somatic cells and germinal cells. Somatic cells are responsible for bodily features. Germ cells are responsible for gamete formation. Yes, sperms in male and eggs in female. So they produce 2 daughter cells with exactly similar chromosome number of parent cell. समझा ना? And it has 2 steps. Somatic और germ cell नहीं, somatic and germ cells दोनों में ही होता है. There are 2 steps. First one is karyokinesis. It is division of nucleus, which is followed by cytokinesis, division of cytoplasm. ठीक है.
ठीक है. So after mitosis we will do meiosis. तो इसमें occurrence दे देना. So far this question has not been asked, mitosis, meiosis. If they are asking, they will be asking difference between mitosis and meiosis. And if you are writing with scientific diagrams, you can score 100%. लिखना कुछ है ही नहीं. So occurrence both somatic cells and germ cells. ठीक है. What is interphase nucleus? Okay. Intact nuclear membrane. This is chromatin. This is nucleolus. Interphase nucleus. So it has a centrosome, well defined nuclear membrane. Within the nuclear membrane there is chromatin, and each chromosome has been doubled because of DNA replication, and there is a nucleolus. So this is the status of cells in interphase at G2 phase. Okay. Now it enters into division phase, and first stage is called prophase, second is metaphase, third is anaphase, fourth is telophase. So 10th में तो पढ़ाई होता है. पता है, when teachers or evaluators do not have knowledge, students are sufferer. मेरा फोर्थ इंटरव्यू जो लास्ट था, मुझे I was facing DP Agarwal as chairman. He told me, what is cytology? Simply study of cell. He asked me from which standard it is taught in our education system. I told him something from 6th or 7th standard. No, it is started in 10 plus 2. So I'm like, sir, cytology is the study of cell. Children are taught about it. 5 to 6 standard still. No, I am sure it is started from 10 plus 2. तुमने सेल कब पढ़ा था पहली बार? 10 plus 2 में पढ़ा था. तो अब उसको समझाएगा कौन? वो चेयरमैन है, तो अब जो कहेगा मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहस हो जाएगा. मैंने विड्रॉ कर लिया अपना. सो ही वॉज नॉट नॉलेजेबल, आई वॉज द सफरर. मुझे सिर्फ 114 नंबर दिया था. ही वॉज आस्किंग अबाउट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. आई एम श्योर ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. उसको सब कुछ नया लग रहा था, वो पढ़ाई नहीं कभी. सो यू मे बी ए director of IT, but you are not teacher of anthropology, you are not teacher of zoology, biology. In which country in the world cytology started from 10 plus 2? कहीं पे भी नहीं. वो मुझे बता रहा था, मैंने लड़ाई नहीं की. अरे मैं क्या किताब मांगू, ज्यादा बोला तो बहस हो जाएगा ना. तब तो 114 भी नहीं देता था. So I was the victim of interview.
और इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, उनकी फॉल्ट है। वो लोग जब बैठते हैं इंटरव्यू में तब दे कंसिडर देमसेल्फ गॉड। बीच में एक साल पहले ही कॉल्ड मी, हमें नहीं, हमारे जो मैनेजर थे किरण सिंह, हमारे कोचिंग में इंटरव्यू गाइडेंस की, वो बोर्ड बनाएगा। मैंने किरण सिंह को बोला था, बुलाओ उनको, कितना पैसा लेगा मैं दूंगा, उसको मैं नौकरी दूंगा। आज ये लोग अभी तो बेकार बैठे रहे ना, कोचिंग में फोन करते रहता, जो हमें ले लो, हम ये कर देंगे, और लोग ले भी लेता। मैंने किरण सिंह को बोला था, अब बुलाइए उनको, जितना डिमांड करें उतना देंगे हम। वो बाद में बोला नहीं करेंगे, शायद कोई बोला अगर मत करना। नहीं नहीं नहीं, मैंने परमानेंटली बुलाने की सोचा था। नहीं, मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के देखे, जो डोंट कंसिडर योरसेल्फ गॉड, बहुत बदतमीज होते हैं वहाँ पे, जब बैठे रहते हैं बहुत बदतमीज करते हैं लोगों के साथ। तो हम लोग साल साल भर तैयारी करते हैं, उनकी आधे घंटे की एक्सपेरिमेंट विथ इंटरव्यू। तो किरण सिंह ने फोन किया था, वो आया नहीं था, दोबारा फोन करा था, हमें खुद ऑफर देंगे उसको, आइए आपको जितना चाहिए मैं दूंगा। किरण सिंह को बताया था, जब आप पैसे के लिए बिल्कुल सोचो, उसको यहाँ पे लाओ। जब आगे से फोन किया है तो रखते उनको। तो यह इंटरव्यू निकल गया। तो डीपी अग्रवाल जो था वो मेरे को झूठ मूठ की, उसको नहीं आता तो मैं ही गलत हूँ, ठीक है। देन कम टू डिवीजन फेज। और पता है, हमें रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं था, स्टूडेंट ही रिजेक्ट कर देता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत प्रोफेसर आते हैं, जूलॉजी में पढ़ाने के लिए आते थे, एंथ्रो में पढ़ाने के लिए आते थे, स्टूडेंट ही मना कर देता, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। जब कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पाते, यहाँ पे कहाँ पढ़ा पाएगा। He asked me from which standard it is taught in our education system. I told him something from 6th or 7th standard. No, it is started in 10 plus 2. So, sir, cytology is the study of cell. Children are taught about it. 5 to 6 standard. No, I am sure it is started from 10 plus 2. तुमने सेल कब पढ़ा था पहली बार? 10 plus 2 में पढ़ा था। तो अब उसको समझाएगा कौन? वो चेयरमैन है, तो अब जो कहेगा मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहस हो जाएगा। मैंने विड्रॉ कर लिया अपना आपका। सो ही वॉज नॉट नॉलेजेबल, आई वॉज द सफरर। मुझे सिर्फ 114 नंबर दिया था। ही वॉज आस्किंग अबाउट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। आई एम श्योर ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। उसको सब कुछ नया लग रहा था, वो पढ़ाई नहीं कभी। सो यू मे बी ए डायरेक्टर ऑफ IT, but you are not teacher of anthropology, you are not teacher of zoology, biology. In which country in the world cytology started from 10 plus 2? कहीं पे भी नहीं। वो मुझे बता रहा था, मैंने लड़ाई नहीं की। अरे मैं क्या किताब मांगू, ज्यादा बोला तो बहस हो जाएगा ना। तब तो 114 भी नहीं देता था। So I was the victim of interview, और it was not my fault, उनकी फॉल्ट है। वो लोग जब बैठते हैं इंटरव्यू में तब दे कंसिडर देमसेल्फ गॉड। बीच में एक साल पहले ही कॉल्ड मी, हमें नहीं, हमारे जो मैनेजर थे किरण सिंह, हमारे कोचिंग में इंटरव्यू गाइडेंस की, वो बोर्ड बनाएगा। मैंने किरण सिंह को बोला था, बुलाओ उनको, कितना पैसा लेगा मैं दूंगा,
उसको मैं नौकरी दूंगा आज। ये लोग अभी तो बेकार बैठे रहे ना, कोचिंग कोचिंग में फोन करते रहता, जो हमें ले लो, हम ये कर देंगे, और लोग ले भी लेता। मैंने किरण सिंह को बोला था, अब बुलाई उनको, जितना डिमांड करें उतना देंगे हम। वो बाद में बुला नहीं करेंगे शायद, कोई बोला अगर मत करना। नहीं नहीं नहीं, मैंने परमानेंटली बुलाने की सोचा था। नहीं, मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के देखिए, जो डोंट कंसिडर योरसेल्फ गॉड, बहुत बदतमीज होते हैं, हम जब बैठे रहते हैं बहुत बदतमीज करते हैं लोगों के साथ। तो हम लोग साल साल भर तैयारी करते हैं, उनकी आधे घंटे की एक्सपेरिमेंट विथ इंटरव्यू। तो किरण सिंह ने फोन किया था, वो आया नहीं था, वो दोबारा फोन कर रहा था, मैं खुद ऑफर देंगे उसको, आइए आपको जितना चाहिए मैं दूंगा। किरण सिंह को बताया था, जब आप पैसे के लिए बिल्कुल सोचो, उसको यहाँ पे लाओ। जब आगे से फोन किया है तो रखते उनको। तो यह इंटरव्यू निकली। तो डीपी अग्रवाल जो था, वो मेरे को झूठ मूठ की, उसको नहीं आता तो मैं ही गलत हूं, ठीक है। देन कम टू डिवीजन फेज। और पता है, हमें रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं था, स्टूडेंट ही रिजेक्ट कर देता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत प्रोफेसर आते हैं, जूलॉजी में पढ़ाने के लिए आते थे, एंथ्रो में पढ़ाने के लिए आते थे, स्टूडेंट ही मना कर देता, जो हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। जब कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पाते तो यहाँ पे कहाँ पढ़ा पाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे थी नहीं करना है। आ रहा है ना समझ में? कुछ मत करो, चुपचाप रहो। अगर बोलोगे तो बोलेगे लड़का सही नहीं है, बड़ों से बहस करता रहता है। मैं एक बार पोलाइटली काउंटर किया था, लेकिन बाद में नहीं। निकोलस,
So prophase can be further subdivided into early prophase, mid prophase, late prophase. For online students, if it is not visible properly, just zoom out, because I have to draw thin filament. In interphase nucleus, I have shown only one centrosome, but in prophase I have shown two centrosomes. So extra one centrosome has come from where? Actually, it was also present in interphase. During S phase, centrosome has also been doubled, but they were superimposed. One was positioned on other. That's why one centrosome appeared to us. So in interphase, centrosomes were superimposed. In prophase, they are juxtaposed. They have come side by side. So two centrosomes can be seen. There is intact nuclear membrane, दिख रहा है. There is nucleolus, दिख रहा है. And chromatin starts its condensation. That's why it appears as a thin filament. So when chromosomes appear as thin filament, they are called chromatids. Chromatids. So nothing to write here. Whatever the facts related to early prophase, I have shown through diagrams. So what you can show through diagrams, don't write it again. Which you cannot show through diagrams, that must be written. ठीक है, क्लियर है? जो क्रोमोसोम जो है, they appear as a thin filament. You can see thin filament. Why? Chromatin just has started thickening or just started condensation. So it will be appearing as thin filament. So when chromosomes appear as thin filament, called chromatin. Okay. Mid prophase, what happens? Centrosome moving towards pole. So this is called equator. This is pole. The centrosome moving towards pole. ठीक है. Second chromosomes has further thickened. See, I have drawn a thick chromosomes, thicker than early prophase. Nucleolus, it starts disorganizing. Dot dot dot. Nucleus disorganizing. So these are the facts of mid prophase. ठीक है. Now come to late prophase. Now chromosomes appear as, sorry, it is not chromatid, chromonimata. So in late prophase, chromosomes appear as chromatids, having two equal arms. Since there is further condensation, so you can see chromosomes with two equal arms. It is the result of further condensation. Okay? Nucleolus disappeared. Here it was disorganizing, it has disappeared here. Nuclear membrane disorganizing. Dot dot dot. देखो. Centrosomes are at the poles, and there is the appearance of spindle fibers. So everything is in the diagram. No need to write anything. Chromatids. Chromatids लिखा है. Spelling में mistake होगी. You may think I am not writing, so it may not be accepted. Don't be worried. We can put our information, facts through various mode. क्या क्या mode है? एक है literary mode, writing. Then diagrammatic mode. Then through flowchart. Then graphical mode. So it is not necessary that you should always present your facts through literary mode. It is required in literature only. You have to write. See, we are dealing with a subject of flesh and blood, real things happening inside the cell. So we can present through diagrams also. So what you have shown through diagrams, don't write again. It will be a repetition. लिखेगा, you are going to waste your time and words. Examiner के कुछ वो सोचेगा आदमी बेवकूफ है, दो बार लिख रहा है. हम लोग सोचता है we can present our facts only through writing. ऐसा नहीं है बिल्कुल. तो देखो जो मैंने कहा है दिख रहा है कि नहीं? So it is the best mode, but you can't do everyone ना. You can't present your facts through diagrams always. And this is cell membrane. तो मैं लिखूँ क्या? ठीक है, चलो आ जाइए फैक्ट. तो प्रोफेस में ही हो रहा है. फोटो देखा?
Thank you. See, when you require paragraph, you must write paragraph. Where you require points, write points. No, it should be combination of both, depending upon the requirement. How could you say that only point presentation will help you? And it is also not necessary that paragraph presentation will help you. Both are required, depending upon the situation.